To begin the symptomatology and clinical usefulness of ammonium carb, before we begin, I would like to give some introductions regarding ammonium carb. Ammonium carb के बारे में देखोगे, it is a very important deep acting chronic remedy that Hahnemann has placed this remedy in his book of chronic disease. Although this medicine was very much misutilized in the prescription of chronic diseases, because of the many factors that some other medicines cover a very strong similarity with this drug, like calcarea carb, like lachesis, like causticum. And so these drugs was most of the time missed during the practice of chronic cases. The beauty of this drug is utilized in acute conditions as well as in chronic conditions. Some of the important features of this in acute condition is, as you all have diagnosed, because of its action on the respiratory complaint and the area that is called nose. इसको कहा जाता है bridge of nose is one of the very strongest action of this drug. ये इस हिस्से के ऊपर उसका एक strong area of affinity है, जिस तरह से इस हिस्से के ऊपर आप देखोगे काली बाइक्रोम, that is at this root, and at this place nasal blockage is one of the very strong feature of this ammonium carb. Is nasal blockage, chronic sinusitis, and all sort of complaint that relates to cold that shift and stick to this part. So cold fix with not able to clear flow, जिसको हम स्पेशली बोलते हैं कोल्ड हो गया, कुराइसा है, सर्दी है, बट डिस्चार्जेस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, नाक बंद है बट डिस्चार्जेस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं. This condition with fixity of the complaint at this place is very important in case of ammonium carb. At this place is very important in case of kali bichrome, and if it covers, it is sticta also in forehead. And if it covers this as well as this maxillary sinus, along with very hard and greenish yellowish discharge, this is very important for kali iode. So this complaint is very clinically very much important as well as cured in case of acute conditions. But this situation leads to a great deeper pathology in ammonium carb. Ammonium carb is placed in a drug which has a very strong accumulation of, you say that what is called bad blood. That what is bad blood means lack of oxygenation. Lack of oxygenation that leads to deterioration of the constitution is very important in ammonium carb if you are going to prescribe this remedy for chronic diseases. This remedy have a very strong and equal and area of this type of lack of oxygenation cyanotic conditions as you find in case of carbo animalis, as you will find in case of carbo-veg, and it has a very strong similarity with carbo animalis. This drug is a strong similarity with lachesis, जिसके लिए देखोगे lachesis के साथ इसका एक रिलेशन भी लिखा हुआ है. It is inimical to lachesis. It is not only inimical to lachesis, it is also similar to lachesis, as well as it is also antidote to lachesis. Antidote to lachesis means, especially Farrington and other advise that if lachesis is used in unhomeopathic way and in lower potency means especially 12C or 30 and like that, for a prolonged period of time, then if it produces the pathogenesis on heart and blood, this can be countered by ammonium carb.
This ammonium carb in old conditions, in previous time, nowadays it is not frequent happening, that it is also utilized for snake bite, to antidote snake bite, because of its this property that destroy the blood. It has a strong tendency to very rapidly degenerate or decompose the blood within the organism, and this decomposition leads to hemorrhagic diathesis of especially black, dark color blood. And here is the beginning of the actual pathogenesis of whole of the complaint of this ammonium carb. So this background of a strong and rapid degeneration of blood, इसके पीछे रीजन एक स्टेप जाओगे, दैट इज पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. उसके पीछे अगर आप देखोगे पुअर ऑक्सीजनेशन के पीछे हिस्ट्री, दैट इज अ टाइप ऑफ obstructive phenomena in the upper respiratory tract. So this obstructive phenomena in the upper respiratory tract, poor oxygenation, degeneration of the blood, and it creates a perfect soil for the pathogenesis of ammonium carb. In this soil, along with a parallel concomitancy of this drug, is of hysterical constitution. This hysterical constitution is very important in this drug. This hysterical constitution, and because of this lack of oxygenation and poor quality of the blood, the patient suffer from strong letharginess, and that's why it leads to a very strong aversion to any type of exercise, any type of physical movement. Even in childhood, always the child prefers to sit in a room, child prefers to have only indoor games. Even the prostration of child is that, एक देखोगे इसके mental rubric में एक लिखा हुआ है, aggravation from talks of others. इसको अगर आप अच्छे से इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करोगे कि इट इज नॉट एग्रावेशन फ्रॉम द टॉक्स ऑफ अदर, लाइक दैट कि किसी की बात सुन के शॉर्ट ऑफ वेक्सेशन दैट appears in this condition, or it leads to this mental symptoms. Rather, it's a strong dislike of any type of movement, a strong dislike of any type of exertion, a strong affinity for being stagnant, कि बात करना तो दूर, बात सुनना भी उसके लिए प्रॉब्लम है. It has weakness while talking, that you can have a very similar phenomena in acid force and stanamate. But even listening to other is also troublesome for him or her. And along with this, there is a very strong feature that is symptom most of us remember in our Materia Medica or study in our Materia Medica, that a lady with a smelling bottle in hand, a hysterical lady with a smelling bottle in hand. Can anyone explain me in short? Maybe ammonium inhalants होते हैं, just used to recover the consciousness of. We can use that smelling bottles. देखो एक्चुअली सही है. एक्चुअली जो इसका आप ओरिजिनल और लिटरली मीनिंग देखोगे और इसका जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट देखोगे, सो दिस स्मोलिंग बोतल, अगर आप देखोगे स्मोलिंग बोतल बोला ही जाता है एक ऐसे कंटेनर को जिसमें सॉल्ट ऑफ एमोनिया और जिसमें लिक्विड ऑफ एमोनिया इज प्लेस्ड, एंड ये प्लेसमेंट होता है. एक्चुअली दिस स्मेलिंग बोतल is not actually for clearing of the nose. इस केस में this patient is having a habit of, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, because हमारे पास एक बहुत important symptom है इसका, snuffles. जो स्मेलिंग बोतल का कॉन्सेप्ट है यहाँ जो आया है,
आप इसकी जो प्रूविंग रिकॉर्ड्स को देखोगे और उस ओल्ड हिस्ट्री को देखोगे, तो वी फ्रीक्वेंटली मिस हेयर बिकॉज इट हैज snuffles, because it has blockage of nose, so we miss it कि हम इसको नाक को क्लियर करने के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, or that is to be a smelling bottle. No, it is not for that. It is not for this local part, that it is a general symptom for the generalities of this patient. और वो generalities क्या है? It is character of a strong hysterical nature. और बात बात पे छोटे छोटे से चीजों पे, छोटे छोटे से एक्साइटेशन पे इसका फेंट हो जाना, and actually it is a hysterical fainting. और वो फेंटिंग इतना फ्रीक्वेंट इसके कंडीशंस में होता है कि आप देखोगे बहुत सारे, देखो जिसको डायबिटिक और इस तरह का कंडीशन है ना, तो वो अपने पॉकेट में कुछ अगर इंसुलिन पे है तो चॉकलेट रखते हैं या समथिंग जो रखे रखते हैं कि अक्सर सडन जब शुगर लॉस हो तो हम उसको खा लें और उससे रिफ्रेश हो जाए. A similar like type of phenomena that happens in this case, especially a hysterical lady keeps something for stimulant to just erode its getting towards faintness. So इसका दो पार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग यूज है. वन इज इट्स यूज फॉर टू get it better from being or going into faintness. So it is not just for to clear the blockage of nose, rather it is more for after a treatment of this fainting, hysterical fainting. And behind this hysterical fainting, there is a tendency of this weak heart. There is a tendency for this strong tiredness, letharginess that covers this remedy as a very strong part. And to avoid this or to getting a quick recovery from this, there is a tendency for carrying this smelling bottle. ये एक पार्ट है इसका जो कि प्रूविंग रिकॉर्ड्स के साथ ये अवेलेबल है. अब दूसरा इसका एक और पार्ट आपको बताएंगे, that this drug needs a frequent stimulation, and in this condition here there is a frequent desire for having some strong you can say जो एक एनर्जी लाने वाला ऐसा स्मेल, एक ऑल्फैक्शन, एक परफ्यूम, ये भी इसके अंदर आएगा. अभी आप लोगों के पास नेक्स्ट लीडर है, नेक्स्ट लीडर में देखो गोरेंसे का एक कमेंट लिखा हुआ है नेक्स्ट लीडर के सेकंड पेज. यस सर. हाँ बोलो. Gurense says this remedy seems particularly useful in constitutionally delicate women who faint easily and want some kind of smelling salts around them most of the time. They are weak with deficient reaction and generally of the lymphatic temperament. Such patient want stimulants, especially such as stimulants पे जो लिखा हुआ है कि those patients of weak and fainting tendency and that you correlate it with hysterical nature. अब यहाँ पे देखो एक जो स्मेलिंग बोतल है that is for the salt of ammonia. अमोनिया इसकी वजह से आया कि वो एक बहुत ही एक नर्व को इरिटेट करने वाला एक स्मेल वहां पे मिलेगा. एक ऐसा स्मेल मिलेगा जैसे लगेगा कि नाक में ना कुछ पिन चुभ गया हो, लाइक दैट. और वहां से एक स्ट्रॉन्ग एक you can say कि very strong pungent type of smell you will find in that conditions. और ये देखोगे बहुत सारे टाइम पे आप विलेजेस में यहाँ पे अक्सर एक वो लोग होता है कि अक्सर कोई इस तरह से हिस्टेरिकल फेंटिंग है तो उसको कुछ वो बैड स्मेलिंग कोई क्लॉथ, किसी का शूज या जूता इस तरह से सुंघाते हैं, बहुत सारे फिल्मों में भी देखा होगा. So this is just to irritate its nerves और वहां से फिर वो रिकवर होगा. So that sort of thing is present in case of this.
उसके बाद यहाँ पे आप जो देखोगे कि ये जो स्टिमुलेंट डिजायर होता है, एंड वो स्टिमुलेंट्स भी बहुत ही ऑड एंड स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ स्टिमुलेंट इज देयर। इस स्टिमुलेंट के बेसिस पे एक छोटा सा एक केस याद आ रहा है, आपको बताएंगे, बिकॉज उस केस के लिए हमने कई बार रिपोर्टरी यहाँ वहाँ बहुत सारा सर्च किया था और वो सिम्टम नहीं मिला। बाद में विथ द हेल्प ऑफ दिस नैश लीडर, दैट्स वाई हम यहाँ पे आपको ये चीज को दिखा भी रहे, आई गॉट द क्लू टू प्रिस्क्राइब एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट। और वो केस था, एक मेल पेशेंट था सफरिंग फ्रॉम जॉइंट कंप्लेन, all other symptoms were covering with like symptoms of Rustux and Calcarea carb. I used to prescribe this remedy, but I'm not getting a good result. और उस केस में एक जो odd symptom, जो बहुत important symptom था, वो ये था कि that boy has a very strong liking for the smell of diesel. और वो अक्सर वहां पे जब कभी भी उसको मौका मिल रहा है कि कहीं पे वो डीजल पेट्रोल फिलिंग हो रहा है, तो वो उसको बहुत इंजॉय करता था। कभी कभी तो वो उसको, जिस तरह से बहुत लोग कॉटन में परफ्यूम अतर रखते हैं, देखा बहुत सारे मुस्लिम्स या अक्सर लोग कुछ पॉकेट में कॉटन में अतर रखते हैं स्मेल करने के लिए, वो उस कॉटन में भिगो के डीजल रखा करता था और उसका स्मेल इसको बहुत अच्छा लगता था, एंड ही फील्स रिफ्रेश्ड आफ्टर द स्मेल ऑफ दिस डीजल। और अनफॉर्चुनेटली हमने जहां तक भी अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज के हिसाब से सर्च किया, ये सिम्टम हमको नहीं मिल पा रहा था, एंड सो आई यूज्ड टू प्रिस्क्राइब हिम Calcarea carb and sometimes on SOS Rustox, but not getting good result. When I searched thorough and in this Nash leader, I found this rubric, and on the basis of this, I prescribed him ammonium carb 10 m 2 dose, followed by placebo for 1 month. And the next month onwards, he feels all the relief in all his complaint. And after few months, now he discontinued the treatment because he is almost better. Although he has utilized all sort of physiotherapy, yoga, many sorts of homeopathic medicine, even with me, he was more than 6 months with not good result with the Calcarea and Rustox. So this smell, a very odd smell, a different sort of a smell, very strong smell. यहाँ पे भी देखोगे जो परफ्यूम डिजायर होता है, इसमें ये परफ्यूम सिर्फ इस वजह से डिजायर नहीं होता है कि थोड़ा सा स्वेट का स्मेल खत्म हो जाए, थोड़ा सा माहौल में हमको अच्छा सा एक स्मेल, हम एक गुड फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस तरह से नहीं। इसके अंदर देखोगे एक बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की नीड होती है। माइल्ड परफ्यूम इज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम। और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम अक्सर देखोगे कभी कभी कि जो साथ रहने वाला है उसके लिए वो इरिटेंट हो जाता है, उसके लिए वो करेगा कि कितना हार्ड है, मतलब किसी को सर में दर्द या किसी तरह का एक ऑड रिएक्शंस लेके फील होगा, बट दिस अमोनियम कार्ब feels stimulated by those type of perfume. Or where I found it that those type of perfume, those type of irritant smell which usually other people doesn't like it as a perfume. इस तरह से हमने आपको डीजल का स्मेल बताया, ये कोई परफ्यूम की तरह यूज नहीं करता, किसी को अच्छा लगता है ऐसा नहीं यूज करते, बट वहां उस केस में मिला और उस केस में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। और इस केस के अमोनियम कार्ब के अंदर ये वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांगली मार्क्ड है। सो ये फीचर इसलिए बता रहे थे कि जो व्हाट वी स्टडी के लेडी विथ स्मेलिंग बोतल इन हैंड, सो वी मस्ट क्लियर दैट दिस स्मेलिंग बोतल is, you can say, if for clearing the nose it is very least or at all not, but it is mostly for its hysterical fainting, or it's getting being stimulant by olfactory route.
सो ये इस स्टिमुलेशंस के लिए बहुत स्ट्रांगली डिजायर है. Along with this ammonium carb is very frequently utilized for menstrual complaint. In menstrual complaint, we find that there is diarrhea, vomiting, what we say cholera-like symptom at the commencement of menses. This diarrhea, vomiting, इसके वीकनेस का कॉज हमने बताया आपको कि स्ट्रॉन्ग, आप देखोगे हिस्ट्री से जो हमने बताया कि एक बहुत ही क्रोनिक scarcity of proper oxygenation of the organism, and that leads to deteriorated circulation or quality of blood is not good enough. और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैथोजेनेटिक कॉज है इसके फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजेनरेशन का. और जो कुछ अदर सिम्टम है दैट गोज इनटू ए कॉन्कोमिटेंट फेज. इस केस में जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है देखोगे ना, दैट इज कॉल्ड, मटेरिया मेडिका में एक सिम्टम पढ़ते हैं जाइमोटिक स्टेट. जाइमोटिक स्टेट क्या होता है? जाइमोटिक स्टेट बोलते हैं एक तरह से शॉर्ट ऑफ प्यूट्रिफैक्शन. अंदर से किसी चीज का, जैसे आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जहां कोई फ्रेश एयर नहीं हो, जहां प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो, जहां प्रॉपर हवा नहीं हो. अब वहां जो एक कंडीशन धीरे धीरे जो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा एक एटमॉस्फेयर पड़ता है जिसको हम कहते हैं ना कि एक अंदर से थोड़ा सा एक सन डेवलप हो रहा है. दैट सॉर्ट ऑफ कंडीशन इफ इट अकर्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक जाइमोटिक टाइप ऑफ डिजीजेस जिसको हम टाइफाइड, टाइफस, आप इसके लिए बहुत अच्छा एक ड्रग है बैप्टीशिया, वो भी देखोगे. सो ये जो जाइमोटिक स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, और इसके अंदर जाइमोटिक स्टेट जो डेवलप होता है जिसके ऊपर देखोगे ये बहुत सारा कार्बंकल अल्सर, मैलिग्नेंट अल्सरेशन इसमें यूज होता है. और सबके पीछे कहाँ रीजन है? बैड क्वालिटी ऑफ ब्लड, पुअर हीलिंग क्वालिटी एंड इंटरनल जाइमोटिक स्टेट. And that is the important reason of further pathogenesis of this drug. ठीक है. सो मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट में बता रहे थे कि यहाँ पे जो कॉलेरा लाइक सिम्टम देखते हो that you will find in this drug, especially the commencement of menses. This is also present in ammonium mure. This is also present in bovista. The strong difference of this symptom that will need to prescribe ammonium carb, you must inquire about the condition of pain. और उसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो जिसके पास एलेंस की नोट है आप एक बार उसको खोल के देख भी लीजिए. that a strong sense of uneasiness, soreness in the thigh. So bleeding mostly at night, ये वो सारा फीचर है. बट ये दो करेक्टर होना चाहिए तब एमोनियम कार्ब प्रिस्क्राइब करने के लिए फॉर दिस कंडीशन. और वो फर्स्ट कंडीशन है, ये अगर कॉलरा लाइक सिम्टम को हम कॉमन कंसिडर कर रहे हैं उसके बावजूद वो दो कंडीशन क्या है? दैट इज द डार्क कलर ब्लड एज वेल एज दिस सोरनेस ऑफ द थाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्कोमिटेंट फीचर है. सिम्टम बहुत सारा मेटेरिया मेडिका में है. आई टोल्ड यू अर्लियर, आई एम एम्फसाइजिंग ओनली दोज सिम्टम्स which are very faithful to me in my cases as well as I have seen or witnessed in other stalwarts. और उसी के ऊपर बता रहे कि चाहे आप देखो मेंस्ट्रुएशन कंप्लेंट में दुनिया भर का सिम्टम लिखा हुआ है, but if you will find this symptom then stick on the remedy, and that is with black blood, flow of dark colored, you can say degenerated blood, and soreness in the thigh, pain in the thigh, a strong weakness in the thigh, then go on prescribing this ammonium carb.
और यही थाई के जगह पे अगर ये पेन इन द फीट हो रहा हो, पैर में तलवे में बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूरल्जिक टाइप ऑफ पेन हो रहा हो, देन गो फॉर एमोनियम म्यूर.